Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So today we will be starting with chapter number 13, the egg and the cat. सबको पता है ना egg और cat? हाँ, meaning of egg and the cat. So ये story eggs के बारे में है, cats के बारे में है and a peahen. Do you know who is a peahen? Peacock, the female version of peacock is peahen. More मोरनी, मोरनी को बोलते हैं peahen. Okay, again, before starting with the chapter, what we will be doing? We will be starting with the warm-up. Stand like a surfer, you know, a surfer. Again, it's an exciting moment. Your teacher will tell you how to. Then count till 10. So you stand like this, like a surfer, and count till 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. While taking calm breaths. 1, there is a change. 2, okay, so you are breathing. Then shake your leg and stand on the other side. 1, 2, then shake your leg. 1, 2, like this. Do you feel all your unhappy and sad thoughts getting absorbed by the ground? See, when you stand like a surfer and you are taking calm breaths, definitely what will happen? You will feel more relaxed, more happy and grounded. Remember to be aware of how your thoughts make you feel. हमेशा ये याद रखिए कि आपके जो thoughts आ रहे हैं अंदर, वो आपको कैसा महसूस करा रहे हैं. Watch them and let them go. अगर उनको watch करते जाइए और वो thoughts को जाने दीजिए और नए thoughts आने दीजिए. So you will feel very good. Think of at least 2 things or people in your life that bring you happiness. Write a sentence on each. ठीक है, कोई भी 2 इंसान जो आपकी लाइफ में happiness लेकर आए. My family in which my father, he was and always be a big source of inspiration for me. Because our parents, my mother, again, is a very, very big influencer in my life. My teachers and now my kids. So see, the parents, they shape you, they teach you values, they tell you what is right and what is wrong. Your teachers, they will always teach you and make you capable in your life so that you can stand against all the odds and you can face all the ills of your life. So for me, my parents and my teachers are the biggest influencer, my inspiration, my everything. I worship them. I pray to God that wherever my father is, he should be at peace. I always think good about my teachers. My mother, bless her with good health always. Okay, kids? So you can write any 2 sentences over here. I have already told you. Now starting with the story. One evening my mother called me excitedly from the balcony. एक दिन क्या हुआ? मामा ने बहुत excitement में मुझे कहाँ बुलाया? Excitedly called me excitedly from the balcony. Balcony से बुलाया. I went up and looked to where she was pointing. So what the writer is saying कि मैं वहाँ पर पहुँचा और देखा कि मम्मा किस तरफ point कर रही हैं. I saw an egg among the entombed creepers on the roof of our patio. Okay, so what the writer, the author is saying, I went up and looked at where she was pointing. I saw an egg. क्या देखा? एक egg देखा. Among the entombed creepers, do you know what are creepers? जो बेल होती है ना, creepers आते हैं. Creepers, ठीक है, जो बेल होती है. तो एक egg है जो entombed हो रखा है. What is the meaning of entombed? Twist हो रखा है. It is twisted. किसके साथ twisted है? Twisted together, मतलब उसके अंदर ऐसे फंसा हुआ सा. Twisted together with the creeper, उसके अंदर है. ठीक है? On the roof of our patio. What is a patio? See, it is a place outside the house where anyone can sit. एक थोड़ा सा आगे की तरफ रूफ होता है या बैठने की जगह होती है ना घर के आगे जैसे, तो वहाँ पर क्रीपर है, एक बेल चढ़ी हुई है, उसमें
क्या एनगल्फ्ड है, क्या है, एक एग है जो फंसा हुआ है, जो आगे बैठने की, जहां पर कि एक पेटियो, जो बैठने की आगे जगह है। I thought it could be a snake's egg. मुझे क्या लगा कि ये एक स्नेक का एग है, सांप का अंडा। Sometimes we did spot snakes slithering among the bushes. हमेशा क्या होता है, what is slithering? It is the movement of the snake, the way the snake moves. जिस तरह से ऐसे रिंग रिंग के स्नेक चलता है ना, उसको slithering कहते हैं। और क्यों लगा कि ये सांप का एग है, क्योंकि हमें कई बार अपने घर के पास जो बुशेस वगैरह हैं उसमें स्नेक्स दिखते हैं, वहाँ पे स्नेक्स चलते रहते हैं, स्लिथर करते हैं। बट अ स्नेक्स एग could not be in this big. बट मेरे माइंड में आया कि अरे स्नेक का एग इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। Then it occurred to me that it could be a peahen's egg. फिर एकदम से क्या लगा राइटर को कि कहीं ये मोरनी का एग तो नहीं है, मोरनी का अंडा, पीहन, मोरनी। There were many in our neighborhood. बहुत थी हमारे neighborhood में। The next evening my mother told me that she had spotted another egg. तो अगले मॉर्निंग ऑथर की मदर ने क्या बताया कि अरे एक और एग मिल गया है। Great news! This meant we had a regular visitor. तो मैंने सोचा अरे वाह, इसका मतलब कोई ना कोई तो है ज़रूर जो आ रहा है और एग दे रहा है। I have always longed for a pet. मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पास एक पेट हो, पालतू जानवर हो। Now I was lucky to own one. So I was feeling good कि अरे वाह, चलो एटलीस्ट एक पेट तो मिला। The next evening I noticed another egg. फिर उसके अगले दिन एक और एग। And I was sure of our friend's intentions. और मैं तो बहुत खुश था कि चलो ठीक है, यहीं पर आ रहे तो वो हमारा पेट बन गया। She had decided to make our roof her home. तो अब मुझे समझ आ गया था हमारा ये जो रूफ है, ये जो पेटियो है, वो अब उसके लिए उसका घर बन चुका है। I was overjoyed, खुशी का ठिकाना ना होना, बहुत खुश, मैं बहुत खुश था। I repeatedly counted the eggs, मैं बार बार उन eggs को काउंट कर रहा था। The following day was the most memorable. There was fourth egg. उसके नेक्स्ट डे, उस दिन तो मतलब मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ, एक एग और आ गया और अब टोटल 4 eggs हो गए। The next morning I finally saw the peahen. और उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या देखा, एक मोरनी को। I dropped a few pieces of bread and roti onto the roof. रूफ पर क्या डाल दी, ब्रेड और रोटी, so that she can eat it. So I'll just move it a little bit down. Can you see it? This is the roof, huh? Nice, na? See, a peahen is there and she's watching from the balcony, and this is the roof, the patio, which is meant for sitting. I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. कितने दिन ऑथर को वेट करना पड़ा, 21 days तक उसको 21 days लगे एग को हैच करने के लिए। It had become a daily ritual to watch the mother bird. अब तो ये डेली का काम हो गया था कि मैं उस मदर बर्ड को देखूं। I didn't see her moving an inch in spite of the sun. मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सन बहुत ज़्यादा था, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ थी, इट वॉज हॉट, बट जो मदर पीहन थी वो बिल्कुल भी अपने एग के ऊपर से बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। One day it rained heavily and I was sure the bird was feeling cold too. बहुत तेज़ एक दिन बारिश हुई और ऐसा लगा कि बर्ड को भी बहुत ठंडा लगा होगा। Though it's nice to have some showers, especially in the hot season, for the mother hen it was not so. I was feeling good, but I think जो मदर हैन थी, जो मोरनी थी, उसके लिए शायद ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। My mother told me that the peahen went away sometimes in the night. There were some cats in the vicinity and I dreaded the thought that they might snatch the eggs. मामा ने क्या बताया ऑथर की कि कभी कभी रात में जो पीहन है वो चली जाती है, बट वहाँ पर देयर वर सम कैट्स, वहाँ पर कुछ कैट्स हैं, विसिनिटी मीन्स आसपास की जगह, एंड आई ड्रेडेड द थॉट, और मेरे को ये सोचकर ही डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो कैट्स हैं वो एग्स को स्नैच कर लें, छीन लें या वहाँ से उठा कर ले जाए। एवरी मॉर्निंग आई वुड गो एंड टेक अ लुक एट द पीहन। तो हर मॉर्निंग में जाती थी और क्या देखते थे कि पीहन वहाँ पर है या नहीं है और एग है या नहीं है। A fortnight later, when I went to the balcony, I was aghast at what I saw.
So one day when the author went to the balcony, तो क्या देखा? Aghast means what has happened. It was so I was filled with surprise and I was not feeling good कि अरे ये क्या हो गया? A cat was scurrying away with an egg in its mouth. Means एक cat ने egg लिया हुआ था अपने mouth में. Scurrying means moving quickly with short steps. That is called scurrying. Moving quickly with short steps. Moving quickly or running quickly. Moving or running quickly with short steps. With short steps. I shrieked at it. जैसे ही मैंने देखा तो मैंने उसके ऊपर चिल्लाया. And in the hula blow it dropped the egg. और उस मीन्स जब उसने वो आवाज़ सुनी और उस कंफ्यूजन में उसने वो एग ड्रॉप कर दिया. आई फेल्ट वेरी सैड लुकिंग एट द कंटेंट्स ऑफ द ब्रोकन एग. तो मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने उस ब्रोकन एग को देखा. आई होप दैट दिस वुड नॉट हैपन अगेन. अब मैंने सोचा कि ये चीज़ फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए. द पीहन कंटिन्यूड टू विजिट विदाउट लूजिंग होप. जो पीहन थी वो फिर भी आती रही. One afternoon I heard my mother calling out to me. I ran upstairs. तो एक दिन मम्मा ने बहुत मुझे बुलाया तेजी से और मैं भागकर ऊपर गई. I saw a teeny weeny chick next to its mother. और मैंने क्या देखा? एक छोटा सा चिक, हाँ, मोर के बच्चे को देखा जो कि अपने मदर के पास था. I ran in to get the camera and just at the moment the peahen got up and another itsy bitsy chick was there. और जैसे ही मदर hen मोरनी फिर से एक के ऊपर से उठी तो वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा और था. They followed their mother and while we were looking at them the peahen flew from the roof onto the ground. तो वो जो बच्चे थे वो अपनी मदर के पीछे पीछे थे और जैसे ही मदर hen ने, पीहन ने, मोरनी ने हमें देखा वो एकदम से उड़कर रूफ से कहाँ पहुँच गई? ग्राउंड पर. One chick followed. I just started at it, taking such a flight from the balcony. एक चिक ने अपनी मदर को फॉलो किया एंड मतलब मैं तो देखती ही रह गई कि अरे बालकनी से एकदम, बालकनी और रूफ से एकदम नीचे ग्राउंड पर. इट वॉज इंडीड नॉट अ स्मॉल हाइट फॉर अ बेबी चिक. बेबी चिक के लिए ये कोई छोटी हाइट नहीं थी. हाउ वुड इट कम अप अगेन? नाउ आई वॉज थिंकिंग या वो वापस कैसे आएगी? क्या? जस्ट सी द पिक्चर ओवर हियर. See, these are the chicks, huh? These are the chicks of the peahen, right? The mother peahen flew back again and flew down once again. अब mother hen जो थी वो पहले वापस गई और फिर नीचे आई. The other chick which was just standing on the edge followed. अब जो दूसरा चिक था जो बिल्कुल कॉर्नर पर खड़ा हुआ था उसने भी अपनी मम्मा को फॉलो किया. We were all looking at them wondering how they would fly back again. हम यही सोच रहे थे कि अरे ये फिर से ऊपर वापस कैसे आएंगे. The peahen walked towards the hedge and out of her house and her chicks following her. जो peahen थी वो हमारे घर की बाउंड्री से, hedge is the fence or the boundary of the house, and then she went out of her house and the baby chicks also followed her. वो भी बाहर चले गए. I asked my mother how the minutes old chicks could fly from such a height. So मैंने अपनी मदर से पूछा कि अरे इतने अभी तो ये पैदा ही हुए हैं, ये कैसे इतना ज़्यादा फ्लाई कर पा रहे हैं इतनी हाइट से. She smiled and answered, it was the trust the chicks had on their mother. तो मेरी मदर ने कहा कि वो एक ट्रस्ट था उन चिक्स का, उन बच्चों का अपनी मदर पर, कि इफ आवर मदर इज डूइंग दैट एंड इफ वी विल फॉलो आवर मदर देन वी कैन ऑल्सो डू इट. I hope kids you enjoyed the story. It was really a beautiful and wonderful story, and it teaches us how to take care of the animals and how to protect them, and the trust which a kid
a child develops for their parents. So parents are important for the child and the child is very important for the parents. So we should always take care of our parents. Now coming to the word meanings, end to end I already told you, twisted together, petio an adjoining place outside a house for sitting, peahen female of a peacock, intentions plans to do something, dreaded feared, scurrying running with quick short steps, longed it means wished, vicinity the area around, aghast filled with horror and surprise, hedge a fence or a boundary. Okay, now coming to the comprehension part, the egg on the roof of the patio was that of a peahen. How long did it take for the eggs to hatch? It is 21 days. Choose another suitable title for the story, The Peahen and the Cat. My Pet Peahen, The Peahen and her chicks, The Peahen and eggs. So, The Peahen and her chicks. I will choose this one. Now kids, coming to the second part. Fill in the blanks. A blank egg could not be this big. A snake's egg. A snake's egg could not be this big. We had a regular visitor. This is the second one. I saw a cat a blank space away with an egg in its mouth. Scurrying away. Short step se bhagna. Scurrying away. Scurrying away. Please always learn new words and their meanings. It will help you in long run. I had just stared at it taking such a flight from the balcony. It is flight from the balcony. Okay. Oh, not a problem. Just a moment. Now we will be doing the C part of it, which is say true or false. Okay, kids. So say if the given statements are true or false. The egg was first spotted by mother. Yes, this is totally true. A snake's egg is bigger than that of peahen. No, this is false. It was bigger. The mother peahen did not care about the weather. Yes, this is true. She was continuously sitting on the eggs. The egg belonged to a quail. No, that is false. It belonged to a peahen. A cat wanted to take away the eggs. Yes, this is true. So that's all in this chapter, kids. Hope you have understood the comprehension part and enjoyed the chapter. So have a nice day. Take care of yourself. Goodbye.